Good evening, everyone. How are you all? Just we'll start the session in few minutes. Okay. So at 4 5, I think most of the students are still joining. After that, we can start the session. Yes, for the next 15 days, you need to take class on PC or computer. So you can also try out what I'm doing over here.
Okay, so good evening, everyone. Now we can begin the today's session. So this is what we will be doing in today's session. We will first go through the basics of Python, what we have learned today. I will just go through a quick revision of 5 to 10 minutes. Okay. और अगर किसी को डाउट होगा कल का जो भी पाइथन का हुआ होता है बेसिक्स तो वो अभी आप पूछ सकते हो. एंड कल मैंने एक टास्क दिया हुआ था टू फाइंड द एवरेज ऑफ द 5 numbers, प्रिंट योर नेम, स्कूल नेम एंड एड्रेस इन पाइथन, एंड ऑल्सो टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 20 numbers. तो वो टास्क जिसने इसने किया होगा वो होमवर्क, और उसका डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिसका आउटपुट है वो भी बता सकते हैं. दैट्स व्हेयर आई गॉट द आउटपुट. दैट्स वेरी नाइस. And then we'll also do a bit more of Python coding today. Okay, so कल तो हमने बहुत बेसिक देखा था कि मतलब जो एकदम बेसिक जो स्टार्ट करते हैं पाइथन का वो हमने कल बस देखा हुआ था. पर आज हम लोग और कुछ पाइथन के कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, और फिर उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में. तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं. Okay, so first begin with the basics of Python, what we have done today. Okay, done yesterday, sorry. So basically, you can just start this ideon.com if you haven't started this website. So can you please let me know how many of you have successfully installed Python and Pygame in your PC? किसका किसका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि मैंने कल एक यूट्यूब का लिंक शेयर किया हुआ था तो उससे आप देखकर इंस्टॉल कर सकते थे अपने पीसी में. ओके, वन स्टूडेंट, टू स्टूडेंट, एनीवन मोर? ओके, थ्री. ओके. Okay, okay, those who have installed Python, they can install Pygame using pip command. Okay, pip3 install Pygame. Okay, let's go through yesterday revision. You can start this website ideon.com for now. So those who haven't installed Python, they can also try out the things at their end. Everyone have opened the site ideon.com. So can we begin now? Let me know in the comments so we can start further. Okay, so
Yesterday the first thing we did is we saw how we can print anything in Python using the print statement. Okay, so अगर आप लोग को कुछ भी प्रिंट करना है पाइथन में तो आप लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, और उसके अंदर डबल कोटेड के अंदर ये जो भी आपको प्रिंट करना है, इफ यू वांट प्रिंट योर नेम, इफ यू वांट प्रिंट द एड्रेस, इफ यू वांट प्रिंट योर स्कूल नेम, you can add that sentence under that print statement and that will get printed. And the second thing we saw is that how to perform any arithmetic operations in Python. You can perform addition, you can perform multiplication, you can perform division in Python. So the second thing we saw that, okay, so yesterday I have considered two numbers as, for example, a equal to 20 and b equal to 30. But you can do directly also over here if you wanna perform in this way. Or you can do here also a equal to b and a minus b, for example. So this is what we saw, the how to perform any arithmetic operations in Python. And the third thing we saw how to find mean and maximum of a list of numbers in Python. For example, here I have considered 6 numbers, and using the max function, we can put the list under the max function, and that will give the maximum of all the numbers. And when we'll use the mean function, that will give the minimum of all the numbers. So this is what we saw in yesterday's session. So I will just quickly run the code and you can see the output. Okay, so here you can see the output. I have printed today is the third day of session. 20 plus 30, 50. 20 minus 20 equal to 0. 20 into 30, 600. This maximum of the list of number is 8 and minimum is 1. So this is your final output. तो यहाँ तक किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो. Any of you have any doubt till here? So I think no one have any doubt for now. We can move forward, I think. किसी को और कोई डाउट है कल के ये जो हमने बेसिक्स किए थे तो आप पूछ सकते हो. Okay, I think we can move forward. Okay, so let's move to the tomorrow homework what I have given. The first one was the print name, school name and address in Python. ये तो सबका हो गया होगा I hope. फर्स्ट टास्क जो था वो सबका हो गया क्या? प्रिंट नेम, स्कूल नेम एंड एड्रेस इन पाइथन. यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. कल जो मैंने टास्क दिया हुआ था उसका जो फर्स्ट टास्क है, प्रिंट योर नेम, प्रिंट योर स्कूल नेम एंड प्रिंट योर एड्रेस इन पाइथन, ये सबका हो गया क्या? See, it's simple. जिसका नहीं हुआ है, here you need to add just name under this print statement. For example, print your name and print school name and your print address. And when you will run the code, all the three will be printed. ओके, आई होप ये सबका हो गया. फर्स्ट टास्क जो था. द सेकेंड टास्क, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स. ये किनका किनका हुआ कंप्लीट?
कैन यू शेयर योर आउटपुट जिसमें 5 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है? So how many of you got the result of second task? Find the average of 5 number. Okay, someone is doing right now. Okay, just do it quickly. Okay, जिनका नहीं हुआ एक बार बस देख लो. If you want to find the average of 5 numbers, you need to consider first any 5 numbers. For example, A equal to B, 5 equal to 10, C equal to 15, D equal to 20. And then average का formula क्या होता है? Sum of all the numbers A plus B plus C plus D plus E and divided by total number of numbers. So here's the total number of number is 5. So, and that's the average. Print. ओके, जिनको डाउट था वो आप देख लो कैसे करना है. एवरेज ऑफ 5 numbers, you need to consider any 5 numbers and then you need to use the average formula. Simple. And the last thing was to find the maximum and minimum of 20 numbers. So here you can in this list, for example, there's 6 number, you can consider any 20 numbers. Okay, and then you can calculate the max and mean using the same syntax. Okay, so now we can move forward. Okay, now we'll look some more concepts in Python. Today we will go through what is function in Python, what is math module, how we can use any module in Python. So I will just use a simple module math for now, but in future, as you know that Pygame is also a module. So we are going to use Pygame module there for the development of the game. So this is the two thing, and the third thing we will be looking over the if and else statement if we got some time today. Okay. So these are the few more advanced stuffs in Python which will be going through this.
Okay, now we can move to the first thing what we'll be doing today, uses of any module in Python. So as I told in the previous lecture that Pygame is a module. Okay. So simply there are different modules available in Python. There are NumPy modules, math module, there are module for string operations. So there are lot of modules available in Python. तो आज हम लोग बस एक सिंपल सा मॉड्यूल देखेंगे, मैथ्स मॉड्यूल, उसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। और जब हम लोग आगे गेम डेवलप करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे ये जो पाई गेम है ये सेम मॉड्यूल है, तो फिर वहां पे आप लोग को पता चलते रहेगा और मैं वो मॉड्यूल कैसे यूज कर रहा, वो आपको वहां पे पता चलते रहेगा। इसलिए आज एक सिंपल सा मॉड्यूल देखते हैं, पाई गेम मॉड्यूल, आई सॉरी मैथ मॉड्यूल, दैट हाउ वी कैन यूज दैट एंड व्हाट आर द functions available with this math module. So we can begin now. ओके, तो फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग को कोई भी मॉड्यूल यूज करना रहता है पाइथन में, तो फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट. So you can at your PC import that module math, import math. Are you done with this? You can import the module math. Any doubt here? I think you can import the module math. Okay. सो फर्स्ट थिंग, अगर कोई भी मॉड्यूल यूज करना हो तो हम लोग को उसको मतलब जो कोड लिखते हैं उसके स्टार्ट में इंपोर्ट करना आता है। ये नहीं कि आप मॉड्यूल का जो है फंक्शन हो यहाँ पे यूज कर रहे हो और मॉड्यूल को नीचे में इंपोर्ट किए हुए, तो वो गलत सिंटैक्स है। तो यू नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल एट द टॉप ऑफ योर, आई मीन, कोड. एंड सो इन द फ्यूचर लेसन ऑल्सो व्हेन यू यूज पाइगेम, आप लोग देखेंगे हम लोग पहले पाइगेम इंपोर्ट करेंगे और फिर उसके जो भी फंक्शन अवेलेबल है वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो इन द मैथ मॉड्यूल देयर आर वेरियस फंक्शन अवेलेबल, but we will be using only few with whom you all are familiar, and we can just go through it. So the first thing we will be using the math only, how to find square root. Okay, in my laptop the site is not working. You can try reloading the site once. Okay, so I hope that should work. See, the in the math module there's a function sqrt, which is helpful in finding square root of any number in Python. So if you want to find square root of any number, for example, consider a variable as result equal to math dot, okay, you need, this is the syntax, you need to first use the module name math, then dot, and then you need to use the function sqrt, and inside that you need to add the numbers. For example, I want to find the square root of 16, and simple. Then after that you can print the result, print result. So just let me run the code and try out this, how this works. See here, we got the output of 6, square root of 16 as 4. ये सबका आया क्या आउटपुट 4? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
Okay, so many of the students have got the output. Just try out any big number, 10-digit numbers. Okay, one of the, so it's simple. First, you need to import the math module in the top, and then you can use the variable result equal to math.sqrt, and under that the number. Try out the same syntax what I have written over here on my editor. ओके जिसका ये 16 का रिजल्ट आ गया वो यहाँ पे कोई बड़ा नंबर कोई भी 10 डिजिट्स का नंबर देखो ट्राई करके क्या आते रिजल्ट्स एंड हाउ मेनी सेकंड इट टेक्स. See, just it took 0.02 seconds. Okay, so this is the how we can find square root of any number in Python. Let's move forward with another function in math module. Okay, so the second thing we'll be looking now is how we can calculate. Okay, sorry, there was some issue in the internet connection. So see how we can calculate power of any number. First, you need to consider any two number. For example, a equal to 5, b equal to 2. And if you want to calculate power of a is to b, I mean 5 ka square. 5 to the power 2. To see how we can calculate using the math module in Python. Result equal to math dot. First, you need to give here the first number a, जिसका पावर कैलकुलेट करना है, एंड द सेकंड नंबर जो पावर कैलकुलेट करना है a कॉमा b, एंड देन यू नीड टू प्रिंट द रिजल्ट. See here we got the result as 25. So done till here, have you are you able to calculate the power of any number in Python? Yes, you can do directly by using power, I mean double multiply sign. But for example, we need to calculate power of 5 is to 20. Then how many sign multiple sign you will use multiplication sign? And here it will calculate just in 1 second or less than that.
Okay, so this was the how we can use any module in Python and some basics of using math module. Math module के बहुत सारे functions, ऐसा नहीं है बस power और sqrt है, ठीक है. जैसे आप exponential निकाल सकते हो, exp है, sin फंक्शन है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos है, तो उसके बाद प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है. तो आपको जो भी जैसे यूज होगा, आपको जैसा भी जरूरत पड़े जो भी फंक्शन का आप यूज कर सकते हो फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैथ मॉड्यूल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. If till here you have any doubts, you can ask in the comments. Any students have any doubts, you can ask in the comment. Any doubts till here? Are you able to find the SQRT power and able to use the math module? Okay, let's move forward. I think no one have any doubt till here. Okay, so the second thing what we'll be looking now is loops in Python. So just anyone can tell me the simple meaning of loop. What do you mean by a loop? Just in English terms. Okay, what do you mean by any loop? L-O-O-P loop. What do you mean by any loop? Okay, it's simple. Just you select all the code and press delete if you wanna erase the code. Okay, one of the student is getting output error. What's the error? Can you add in the comment? Loop is, you can say that loop means repeating, I mean repetition of anything. If you are repeating anything for example, if you are repeating anything 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, then that's called a loop in the simple term, you can say it. And how we will see, we can use the loops in Python right now. Okay, so let's move forward. For example, if I give you a task, okay, print your name 10 times, what will you do? आपको जो भी सॉल्यूशन लगता है, प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स इन पाइथन, what will you do? Just drop your solution in the comments. Okay, let's see. जो मुझे लगता है फर्स्ट सॉल्यूशन came into your mind if someone told you that print your name 10 times, then you will write print, I mean for example your name, and this you will use the print statement 10 times.
See, I think this was the first solution that came in your mind if you don't know what's loop in Python. सो ठीक है, 10 टाइम हमें अगर प्रिंट करना हो तो हम कर सकते हैं, 10 टाइम से कॉपी पेस्ट. फॉर एग्जांपल इफ वांट टू प्रिंट समथिंग 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स, then what will you do for that? So there where we use loops in Python. Okay, so there are three types of loops: for loop, while loop, and there's one more. But in this class we will be looking for just in how to use for loop in Python. Okay, so let's move forward with that how we can use for loop in Python. मैंने फर्स्ट डे आपको बताया, मैं कल के सेशन में बताया हुआ था कि सारे जो ये है लैंग्वेज उसका अपना अपना सिंटेक्स होता है सब कुछ यूज करने का. ठीक है, तो अगर आपको फॉर लूप यूज करना है पाइथन में तो उसका अलग सिंटेक्स है, द रूल्स. और अगर आपको सी प्लस प्लस में यूज करना है तो उसका अलग सिंटेक्स है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू यूज फॉर लूप इन पाइथन, द सिंटेक्स इज फॉर I. You can use any variable here for I or num. And if, for example, that I am using I in range 0, C. ओके, जो यहाँ पे देखो अभी हम लोग को अगर कोई चीज 10 बार प्रिंट करना था तो हम लोग कितना लाइन ऑफ कोड लिखे? 10. और अगर हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो कितना लाइन ऑफ कोड लिखे? बस 2. ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या है? ये इसका फॉर लूप का, फॉर फर्स्ट यू नीड टू यूज फॉर keyword. Okay, and then here you need to use the I. So this is like in the range 1 to 11. So जो लास्ट नंबर है ना वो कंसिडर नहीं होता है. अगर आपको 12 तक प्रिंट करना आपको 20 नंबर्स प्रिंट करने हैं. ठीक है, देन यू विल प्रिंट फॉर इन रेंज 1 to 21. तो जो लास्ट नंबर है ना वो नहीं काउंट होता है, उसके जो n-1 है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर दैट n is equal to 11, then the loop will repeat only till n-1. Okay, so here for example consider आप करके देखिए. Here I will replace this with n and see what will be the output. The same output we will get. See where we are getting the same output. अगर आपको फिर डाउट हो रहा होगा कि what I is doing here. Okay, so let's try printing I once. You will get 1 to 10 in a row as you are getting your name. Now you will get 1 to 10 as printed. तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ये जो n है मतलब लूप जहां तक रिपीट करता है वो n-1 तक ही जाता है. सी the last output is 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है फॉर लूप, पर एक बार आप समझो एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप सिंटेक्स याद रखो. अगर मुझे कोई रिपीटेटिव वर्क करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ 1000 नंबर्स, वी कैन यूज फॉर लूप फॉर दैट. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ 1 लाख नंबर्स और वी नीड टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़ी ऐसे एक एक स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअली कोड लिखते रहेंगे. वी कैन यूज लूप इन दैट केस आल्सो. So this is why we use loop. Sir, why? So this is the syntax of for loop. For you, for this is a keyword, you need to use your I the variable and range. आपको कहाँ से कितने लूप रिपीट करने, जैसे मेरे को for 10 टाइम्स करने थे तो मैंने n का वैल्यू कंसिडर किया 11.
अगर आपको 20 टाइम्स करने हैं तो आप n का वैल्यू कंसीडर कर सकते हो 20, और 100 टाइम्स करने हैं तो 100 कंसीडर कर सकते हो. जस्ट ट्राई इट आउट वंस. Just consider the value of n equal to 100 and see the output. It will print the number from 1 to 100. I mean sorry 1 to 99. कि मैंने बताया n minus 1 consider होता है. See here the last number printed is 99. In line 7 there is nothing. There's a blank space. So for loop में किसे doubt है फिर अभी पूछ लो. Anyone have any doubt in for loop? Or you got the output? So let's try printing your name 10 times. I mean just 5 times. Okay. n का वैल्यू क्या रखोगे अगर 5 टाइम्स नेम प्रिंट करना है तो? अगर अपने नेम को 5 टाइम्स प्रिंट करना है तो n का वैल्यू क्या रखोगे? जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ n इन कमेंट. If you want to print your name 5 times, what will be the value of n? Okay, I got one right answer. Okay, I think many of the students have understood this. Okay, 6. Got it, got it. Yeah. अगर किसी को डाउट है तो फिर अभी पूछ लो बिफोर यू मूव फॉरवर्ड. Okay, yeah, it's correct. You need to keep the value of n as 6 if you want to print your name 5 times, because it will go from 1 to n minus 1. Sorry. Okay, so we can move forward. Now we will see what is function in Python. Okay. लूप्स क्लियर हो गया. मैंने बस बेसिक फॉर लूप आई मीन फॉर लूप बस आज देखा है, पर और भी लूप्स होते हैं. अगर आप लोग को चेक करना है तो आप लोग सेशन के बाद just type in Google loops in Python. You will get all the loops which is available in Python. Now we are going to see function in Python. Okay, so we can move forward now. What is function in Python? See, before I make you understand the concept of function in Python, tell me one thing, that you want to print, sorry, yeah, you want to calculate average of 5 different students. What will you do? You need to calculate average of 5 different students. For example, first student name is, consider as student 1 name as S1 equal to Deepak, S2 equal to Rahul, S3 equal to, ऐसे ही सिंपल आप कंसिडर करो 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है. तो आप क्या करोगे? एक स्टूडेंट रहता है तो यार आई कैन डू सिंपली कंसिडर द मार्क्स इक्वल टू 50. फॉर एग्जांपल देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, b equal to, I mean sorry, we can consider 3 different subjects. Maths equal to 50, physics equal to 100,
and English equal to 50. And then we can calculate print maths plus physics plus English. So we calculated the sum. What is this? Is the formula of average, and then we divided by 3. So अगर ये एक स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट करना होगा और उसका नेम प्रिंट करना होगा तो आप ये कर सकते हो. यू विल कंसिडर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ओके, एंड यू विल जस्ट प्रिंट द एवरेज ऑफ दैट विच इज 70. ठीक है, पर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है तो ये पॉसिबल है कि हम लोग के लिए कि हम 10 स्टूडेंट्स का डिफरेंट ऐसे सेम फॉर्मूला 10 बार लिखने जाए. So अगर हम मुझे वही करना होता, so why we are using programming, because programming is used to make our daily life simple. What's the complex problem we are trying to solve, we can simplify using programming. So what's the use of programming if we need to do the same thing here? We need to write the same formula for the 10 different times. So to solve this problem, we use function in Python. I mean function in any language. But we are using right now in Python. What is function? Okay. But we have function in all different languages. In C++, there's also function. JavaScript, Java, कोई भी language ले लो, वहाँ पे आपको function का use करना ही है. But it depends आपको क्या जरूरत पड़ता है, फिर आप use करते हो. So I will write the simple syntax of Python or function. Just one moment, wait for the output and then I will explain. It's still executing. It's taking a bit of time. See, so here I wrote the function to print the name, and the average marks of 3 subjects. ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर मैं फंक्शन का यूज कर रहा हूँ तो इफ आई वांट टू प्रिंट द name and average of 10 different students or 100 different students, so bus I need to call this function. So the syntax is you need to use the def keyword, okay, and then the function name. So I have used the function name as student details, okay. So you can use anything if you want to use, I mean
student marks or calculate average. So you can name your function as per the usage. Okay. And then what I need to print using that function, the name. And then I took the three subject marks, maths, English, science. And then we need to put here a column. This is the rule. Okay. So this is the rule. I mean, this is the syntax of defining a function in Python. And then simple जो हम लोग वो कर रहे थे बस वही करना है, print name, print the average marks is and the formula of the average. So and when we call that function, आपने यह function declare किया, ठीक है. अगर आप इसे call नहीं करोगे, so let me this comment out, तो फिर कुछ भी output नहीं आएगा आपका. अगर आप इसे कमेंट कर दिए तो फिर आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है. You can see here. Okay, there is nothing in the output box. Then again, if we want to call the function first with the name and the marks of three, maths, English, and science. So for example, here I need to use this function for other student also. So simply I need to call again the function name, Rahul, 30, 20, 10. फिर हम लोग को ये जो फॉर्मूला है और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये फिर रिपीटेटिव नहीं लिखने पड़े. जस्ट यू कॉल द फंक्शन एंड यू विल गेट द आउटपुट. इफ यू वांट टू कॉल फॉर द थर्ड स्टूडेंट, सिंपली चेंज दिस वैल्यू. और आपको सेम रखना है तो सेम रखो और चेंज करना है तो चेंज करो जैसा आपको जरूरत पड़ रहा है, ठीक है. एंड यू विल गेट द आउटपुट. सो इट्स नॉट लाइक इफ यू वांट टू डू द सेम टास्क फॉर 10 different users, then you are going to write the same code 10 different times. You can use function for that purpose. So this is why function is there in Python and in any programming language. तो अगर आपको थोड़ा function का बस एक बार ये syntax याद रखना पड़ेगा. So if you want to declare any function, then you need to use this specific syntax. That def keyword, which is the keyword in any language, I mean Python. Student details, the function name, and then this is called as the arguments. The arguments is that what we need to this function to do. Okay. So you need to give the value और यहाँ से हम लोग value pass करते to the argument. So I have passed the name as Deepak, the marks of maths as 50, the marks of English as 40, and the marks of science as 30. And then here we calculated the average of all three. So this is how we can use a function in Python. Any doubt in this? Do any students have any doubt till now how you can use any function in Python? Just let me know, please. Those who are getting error as invalid syntax, just see. You might have typed something wrong or you are missing something. So I hope function is clear now to everyone. फंक्शन सभी को क्लियर हो गया क्या? क्या कोई डाउट है? Okay, to install Pygame, if you have installed Python successfully, then you can use the command pip3 install Pygame. It will install Pygame in your PC or I mean laptop if you have. Okay, I think the function is clear to most of the students. अगर किसी को डाउट होगा तो फिर वो कल पूछ सकते हो.
So do you have any other questions what we have done in today's session related to that? Today we saw how to use any module in Python. Okay, then we saw the loops in Python, and specifically we saw for loop. And the third thing we saw how to use function in Python. And what's the purpose of using function? Why we use function in Python? So these were the three things we saw today in today's session. Okay, there's no doubt. I will give a simple task today at the end of the session. You will get it on the Facebook page, which you can try it at your end today. Okay, so bye. Let's meet tomorrow. Okay. I hope you are enjoying the session and see you all tomorrow. Bye.